Okay. So by today, we are going to start with what exactly it means by the time dependent action. Yesterday, like we have seen one example of the immediate actions, how you could send the immediate, how you could send the email. So that is what we have seen. And it was an example of the immediate action. So what we have done is that as soon as one lead record has been created, so, we can send an email to the lead person. And this is something what we wanted to be done immediately. And so this is an example of immediate action, right? And there were few assignments also, like these were the 3 assignments. And have you guys attempted this? Anyone? Yeah, in the chat. Any one of you has attempted this? Actually, I almost forgot you guys to tell that, oh, जहाँ पे option है, to add the 5 email IDs. So I almost forgot you to tell कि आप लोग चाहो तो ये email ID CC में डाल सकते हो, so that I will also receive, one of the email, and this actually confirms whether you have done this example or not. So if you have not done this, and so you could do one thing, like whenever you attempt this assignment, so please add this email ID onto that 5 email ID options what we have seen, so that I will also receive this particular email, whatever you have been, whatever you are trying to execute. It will confirm me whether you have done the assignment or not. Yes. So let's start with the new concept, that is what does it means by the time dependent actions. And then when we have written this governor limits, I told you one thing, that yesterday even we have seen we could maximum plan for 40 immediate actions. So like yesterday we have seen this, in the immediate action sections, you could maximum have 40 immediate actions within the same workflows. And regarding the time dependent action, we have 2 things written over here. The first thing is that a workflow rule can have maximum 10 time triggers. Now what does it means by a time trigger? So we are going to see this by in the today's session also. And the second thing is within one time trigger, we can maximum have 40 actions. So what does it means by a time trigger? And then we could maximum add 10 time triggers, and within one time trigger we can again add 40 actions. That means altogether 40 multiplied by 10 is 400 time dependent actions. So if someone asks this in the interview, what is the governor limits of immediate and time dependent action, so you need to say that we could maximum have 40 immediate actions in a workflow. But regarding the time dependent, you could have 400 time dependent actions, right? So now what does it means by time trigger, and how to add the actions in the time triggers? Everything we are going to see right now, so don't worry about that. So let me straightforward go with the use case. It will be more better you to, it will work more better for understand this concept with this use case. So we need to configure a workflow rule on the position object. And what we want to do is that whenever a new record of position has been created, if something new has been created, a new position has been created in the organization. So what we need to do is that, we should notify the hiring manager upon assigning a new position record. So this means, let's first understand this, what is the problem statement is. So in the position record, if I created a new position by filling up this form, and then we select one of the hiring manager for this position, whatever, for example, we selected Mr. Prajwal for this, and this is one of the position, this is one of the position, and for this position, Mr. Prajwal is actually handling this position. So what should really happen is that, okay, this is HR, and this one is the HR email ID. So on this particular email ID, we should send one email to this Mr. Prajwal that one new position with this details, all these details has been created, and this particular position has been assigned to you. Okay. So this is what the use case is. So whenever a new position is created, and rather it's assigned to a new manager, and it's assigned to a manager. So we should actually fire one email, and we should see
that these are the details what we these are the details of this position, and you need to close this position on this milestone date, and this is the details of this everything, like how many number of vacancies are there, then for which location this position has been generated, and everything. What is the open date, what is the close date, and what's the minimum budget we could offer to the candidate, how much maximum we could offer for this position to the candidate, and everything. What are the skills required, and what is the description of this position. So every detail related to this position. What we want to send this to the HR's email ID. Okay. So as a prerequisite now, yesterday also we have discussed this. If you wanted to send an email, you must have an email template. So let's go to this communication template and let me see to the classic email template. Let's check whether we have a supporting email template for this kind of operation or not. So I think I already have this. So let me go with this and see what is written over there. A new position with the position name with the reference has been assigned to you. So it's a similar kind of email template what we want in the use case. So dear hiring manager, and we have the below position in our organization. And then we are pleased to inform you that one new position with this name has been assigned to you. And please have a look into the position details, and you need to close it before the milestone date. Here I could, dynamically insert the date, milestone date also. So ये इसको edit कर लेता हूँ. Let me little bit make an editing over here. कि milestone date जो है उसको हम bracket में let me copy this position milestone date. इसको हम थोड़ा सा ना यहाँ पे bracket में display करेंगे. What happened? I think I have not copied position milestone date. Yeah, let me just POS. Okay, यहाँ पे नहीं चला. Anyways, POSI. Yeah. Giving me some help, and yeah. So यहाँ पे जो position milestone date है वो भी display हो जाएगा. Let's make few of the editing. Let's make few editing so that it's look a little bit formatted. Make few editing over here. I don't know what's wrong with this. Anyways. Okay. Let me now save this, and we are going to use this email template, right? चलो. So अब यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ चीजें हैं, मतलब यूज केस मैंने एक्चुअली पूरी डिस्कस नहीं किया. यूज केस क्या है ये तो आपको समझ में आ गया कि whenever a new record has been inserted inside the position, we need to give a notification email to the hiring manager. Now on the same thing, first of all आपको जैसे ही notify the hiring manager immediately. First thing, as soon as the position has been created, as soon as the position record is being created and it being assigned, we need to notify the hiring manager immediately. तो सबसे पहले एक तो ये कि we wanted an immediate action. That means we wanted one email alert to be sent immediately. This is the first thing. Now second, now we also require to notify the hiring manager by the reminder notifications periodically. That means there are two things over here. This complete is your use case. First of all, this complete is your use case. ये पूरा problem statement ये है. So there are two things what the client is expecting from us. The first thing is that now as soon as the position has been assigned, an immediate response, we should give an email alert as an immediate response. That means one immediate action is expected. The second thing is that अब see ऐसा हो सकता है ना, probably the hiring manager could be busy, and if he forgot this and he slip out the date, so ऐसा नहीं होना चाहिए. That is why we again wanted some of the reminders kind of emails to be delivered to him. कि एक बार तो जैसे ही position record create हो जाता है, as soon as the position created, we need to fire one email. एक तो एक email उसको उसी वक्त दे देना है.
और दूसरा वी वांटेड टू इम्प्लीमेंट पीरियोडिकल रिस्पॉन्सेस ऑल्सो। तो पीरियोडिकल रिस्पॉन्सेस कैसे हैं कि milestone date, I mean the date before the person is expected, the hiring manager is expected to close this position, that is something called as milestone date, ठीक है। तो 10 days before the milestone date, 10 days before एक email जाना चाहिए कि you have this position as an open position है ना आपको, and then 5 days before one email alert, 2 days before also he should get, on 1 day before, and even 0 days, you know, जिस दिन है उस दिन milestone date के दिन भी तक उसको email जाना चाहिए। Now, what happens one day after? You know, if this hiring manager probably is not able to get the sufficient candidates, हो सकता है ना, पोजीशन क्लोज करने का मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि आप किसी को भी उठा के बिठा दो उस पोजीशन पे। He must get the suitable candidates for this position. Now, say let's take this as an example कि उसने काफी try किया and he has taken so many interviews, but he didn't find any suitable kind of candidate for this position. So what he needs to do? So after 1 day, you know, 1 day after the position milestone date has been over, we should automatically, this workflow should automatically update the field. What which field it should be updated? It should update a field called as status, and it should make it closed automatically. Now what it about? Understand this completely. See, as soon as a new position is being created, okay, as soon as a new position with today's date, a new position is being created. And let's say that the milestone date is like, you know, it's like 30th of next month. So this particular person, you know, Prajwal, you know, is with this email ID, like prajwal@test.com. Now what we want like, you know, this senior admin. Okay, this position is going to be get generated. How many vacancies are there? There are only one vacancy. So he need to get one candidate for this Bangalore location. Okay, and the minimum budget what he could offer here is 10 lakh, and the maximum budget he could offer is 50 lakh. 100,000, 10,000 lakh, 10 lakh. Okay, so Prajwal is that hiring manager person who is responsible to, you know, close this position on and before 30th of 12th of next 30th of next month. Sorry. Now see, Prajwal, actually अब यहाँ पे मैं कैसा डिजाइन कर रहा हूँ इस वर्कफ्लो को, what the client is expecting to do is that कि as soon as this position is going to be get created, जैसे ही ये position create होगा, you know, as soon as I save the record, you know, this position is going to be get created. So जैसे ही यहाँ पे ये हमने save किया, one email should be fired immediately. One email should be fired immediately. एक तो ये चीज, ठीक है। Now, अब इसका एक तो एक ये रिस्पॉन्स है। Now second, we should also, you know, have a provision कि हमको periodical alerts भी देने हैं प्रज्वल को। Probably Prajwal is a very busy person. He is handling, you know, 5 to 7 positions, and he almost forgot to recruit for this position. तो ऐसा नहीं होना चाहिए। That is why, you know, client is expecting us कि एक 10 दिन पहले से, you know, 10 days before the milestone. So if 10 days is like 30 से पहले 20 दिसंबर, you know, from 20th of December को से ये स्टार्ट होना चाहिए पूरा। तो 20 दिसंबर को एक और ईमेल जाएगा प्रज्वल को, Prajwal, you have this position, senior admin position as an open position, and you need to, you know, select one of the candidate for this position for the Bangalore location, everything, whatever. अब देखो आप यहाँ पे चाहो ना तो हर 5 अलग-अलग 6-7 अलग-अलग ईमेल टेम्पलेट्स डिजाइन कर सकते हो, बट अभी मेरे लिए वो फिजिबल नहीं है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट कि मैं तो यही ईमेल टेम्पलेट यूज करूंगा, द सेम ईमेल टेम्पलेट आई एम गोइंग टू यूज इट एवरीवेयर। लेकिन रियल टाइम पे ऐसा नहीं होता है, रादर रियल टाइम पे बिकॉज हर एक ईमेल का कंटेंट अलग होना चाहिए ऑफ कोर्स के we should notify, you know, on every different occasion we should notify some different thing. तो यहाँ पर कैसा कि अभी मैं तो क्रिएट नहीं करूंगा, बट आई विल सजेस्ट एवरी वन ऑफ यू दैट यू शुड क्रिएट, you know, 5 to 6 different templates for this, so that आप उसमें mention करो कि it's almost 10 days left for, and Prajwal, you need to close this position, you know, you almost have this much of the data, आपके पास में इतने दिन बचे हुए हैं। तो like this, you know, you should give the exact notification. So what I suggest to every one of you is that, you know, you should create 5 different email templates for this. अभी मैं तो नहीं करूंगा, I'm going to use the same for everything, you know, same for everything. ये चारों पांचों अलर्ट जो है मेरी 10 days before, 5 days before,
2 days before, 1 day, and even on the day of the milestone. I'm going to use the same email template, but I suggest every one of you that you should create. You have the time, you are onto the training, and you are here for the learning purpose. So that is why utilize your time and just create uh, how many, 1 2 3 4 5 different email templates for this. तो क्या होगा कि 20 तारीख से इन 20th of December प्रज्वल will get one more email कि प्रज्वल one position has been open. उसके बाद में second on 5 days before, that means 25th को उसको एक email जाना चाहिए, 27th को उसको एक email जाना चाहिए, 29th को, even on the 30th also he should. But what should happen, if probably Prajwal is also trying to get some, but because this is an important position, senior admin, and he must recruit some of the responsible and mature guy for this. But probably Prajwal is not getting any of the suitable candidate. What he can do, he's trying, he's doing his best. He's giving his 100%. He's taking interviews day and nights, but he's not getting that suitable candidate. अब किसी को भी उठा के थोड़ी ना बिठाएगा प्रज्वल. Prajwal understand the gravity of this position. कि सीनियर एडमिन का मतलब क्या होता है, तो इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल टास्क जो दिया गया है प्रज्वल को. तो ही कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दिस. इधर अगर सुटेबल मिलेगा तो ही विल गोइंग टू रिक्रूट, अदरवाइज कीप दिस एज इट इज. नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर 1 डे, लेट्स टॉक अबाउट कि प्रज्वल ने बहुत ट्राई किया लेकिन उसको कोई कैंडिडेट नहीं मिला. सो ऑन द 31st, यानी कि एक दिन बाद, व्हाट्स द माइलस्टोन इज 30. 31 दिसंबर को क्या होना चाहिए? ऑन द 31st ऑफ दिसंबर व्हाट शुड हैपन इज दैट वी वांटेड दैट ऑटोमेटिकली एक फील्ड अपडेट एक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, एंड दिस फील्ड अपडेट एक्शन शुड मेक सर्टेन चेंजेस. एक पोजीशन स्टेटस नाम की एक फील्ड है, पोजीशन स्टेटस हियर. सो ऑन द 31st of December, that is one day after the milestone date, the status of this position, senior admin, जो कि new position था, should automatically be changed to closed. It should automatically be changed to closed. ये होना चाहिए. So we wanted to update a field. Someone of you has asked me this. Probably when I was explaining. I think a day before yesterday, somebody has asked me, "Sir, can you please explain how to perform this field update action?" So I told him, "Yeah, you are going to have an example of this. So don't worry, this is the example. So how to plan, how to update a field with the help of workflows, that is we are going to learn." So give example, and this one is really a good example for learning so many things. We are not just learning time dependent action, rather we are also learning field update actions, like how to update a field. That is also we are going to learn with this example. So now I hope with all this explanation, you probably have cleared with the use case, every one of you. Yes or no? Please on the chat, have you understand the question? Every one of you, everybody, come on. Yes, everyone. जिसने नहीं बोला मुझे समझेगा कि इसको समझ में नहीं आया क्वेश्चन. आई विल स्टार्ट रिपीटिंग द क्वेश्चन once again. आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ है क्या? Yes or no, guys? Everyone, come on. Are you listening to me or not? Akshay, Suhail, Prachwal. Only 3. Okay, Yash also has understand the question. Who else? Yeah, Divya. I'm going to repeat the same thing. Okay, apart from Divya, Ajay. Yeah. What about the other guys? I am asking whether you understand the question or not. ये use case आपको समझ में आई है या नहीं? This is what I'm asking. Yes, Kiran, Sandesh, Sanket. So many people are there in the class. Suraj is also here. So anybody else? Sanket probably have not replied. Yes. So because Divya has asked me to repeat, I'm once again repeating this. देखिए, इस एग्जाम्पल में आपको 2 चीजें करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, as soon as एक नया पोजीशन रिकॉर्ड क्रिएट होता है, we need to fire one email. हमको एक ईमेल फायर करना है immediately. That means we have one immediate action. We have to perform one immediate action. और हमें क्या ईमेल फायर करना है? हायरिंग मैनेजर. किसको ईमेल फायर करना है? हायरिंग मैनेजर को. कि ये एक नया पोजीशन रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है और आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पोजीशन है, आपको इस पोजीशन को क्लोज करना है. दिस वी वांटेड टू हैपन इमीडिएटली. तो पहली चीज एक इमीडिएट एक्शन है ईमेल अलर्ट. उसके बाद में एक और चीज यहाँ एक्सपेक्टेड है, वी ऑल्सो वांटेड टू हैव पीरियोडिकल अलर्ट्स. ठीक है,
समय के साथ साथ भी कुछ ईमेल आने चाहिए, जैसे कि माइलस्टोन डेट जो है कि जिस डेट से पहले क्लोज हो जानी चाहिए पोजीशन, उसके 10 दिन पहले एक ईमेल जाना चाहिए, उसके 5 दिन पहले, उसके 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, इवन ऑन द डेट ऑफ माइलस्टोन ईमेल जाने चाहिए। और आखिरी क्या हो, मतलब जब माइलस्टोन डेट क्रॉस हो जाए तो उसके बाद क्या, तो उसके बाद में जो फील्ड का स्टेटस है ना, पोजीशन में जो स्टेटस नाम की फील्ड है, उसका स्टेटस जो है वो क्लोज्ड हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो दिस इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म। तो यहाँ पे कैसा है, एक अगर मैं एक आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, एंड दिस जनरली वी आस्क दिस इन द इंटरव्यू आल्सो, कैन वी हैव, कैन वी प्लान, कैन वी परफॉर्म both immediate as well as time dependent actions in the same workflow? क्या आप एक वर्कफ्लो के अंदर टाइम डिपेंडेंट और इमीडिएट दोनों एक्शंस को प्लान कर सकते हो क्या? So the answer is yes, yes, we can do that. And this is the example. You are going to get this a clear idea कि आप एक ही वर्कफ्लो के अंदर आप इमीडिएट एज वेल एज टाइम डिपेंडेंट एक्शंस को क्लब कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो द ईमेल टेम्पलेट तो है मेरे पास ऑलरेडी, सो आई एम ऑब्वियसली गोइंग टू यूज द सेम ईमेल टेम्पलेट। ठीक है, चलिए तो चलते हैं, वर्कफ्लो बनाते हैं इसके लिए। दैट्स ग्रेट, ईमेल टेम्पलेट वी ऑलरेडी हैव दिस, डोंट वरी। सो वर्कफ्लो बनाने के लिए यू नीड टू गो टू सेटअप एंड देन बिल्ड। बिल्ड में आपको क्रिएट को एक्सपैंड करना है। सी एक जनरल प्रैक्टिस में आपको बताता हूँ, पीपल यूज टू डॉट लाइक दिस आल्सो। ठीक है, तो ये क्विक फाइंड मेनू है ना, इसका यूज करना सिखाते हैं। This is one of the shortcut. Yes, of course. This is one of the shortcut. If you type the workflows, you are going to get the navigations clear cut. यहाँ पे workflow है, ठीक है। जनरली मैं ये नहीं पढ़ाता। Why I don't teach like this? हाँ, लेकिन रियल टाइम पे आप इसको यूज कर सकते हैं। Now, why I don't like teach like this is the reason. See, you are now onto the learning stage. और ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि जब हम कोई चीज सीख रहे हैं तो शॉर्टकट्स नहीं होना। थोड़ा सा लंबा रास्ता ही सही। क्या होता है कि रास्ता भले ही लंबा हो, ठीक है, लेकिन आपको चीजें ज्यादा पता चलती हैं। समटाइम्स जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई, इंटरव्यूअर्स कुड आस्क एनीथिंग, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है स्टैंडर्ड किसी के भी पास जिसमें ये लिखा हो कि सेल्सफोर्स के सारे इंटरव्यू क्वेश्चन इसमें मौजूद है। नहीं, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। वी ट्राई टू गेट इट। अभी रिसेंटली someone inside your batch has faced, Harsh ne probably has, uh, he has faced this mock interview, and one good thing what he has done is that कि उसको जितने भी mock में questions पूछे गए थे, so he has written all those questions and he has posted this in a group. Now this is something which I really appreciate, this courtesy. Why? And I'm expecting every one of you to do the same thing. So अभी ये ग्रुप को बाद में आगे में आपको जो है आप सभी को ऐड किया जाएगा एक इंटरव्यू प्रैप के ग्रुप में। एंड whenever you are giving the mocks and and then we are giving the actual interviews, it's our responsibility for everybody कि we should pose the questions so that हम भी update होते हैं उस चीजों से। So interviewer could ask you anything, boss. Interviewer could ask you anything, sometime just to cross verify. He could ask you the navigation. How could you open a workflow? How could you set up a workflow? What is the navigation? What is the navigation? Seems like to be a simple question. ऐसा सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, बट इन द मशीन टेस्ट अगर आपसे बोला जाए ना कि एडमिन का आप मशीन टेस्ट दे रहे हो, ऐसी एक स्क्रीन आपके सामने खुली हुई है एंड ही इज आस्किंग यू without using this quick find box, without using this quick find, tell me what is the navigation to open a workflow, then you must understand, आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार गो टू दी सेटअप मेनू। ठीक है, कभी कभी ना हम सुनते 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 हो याद हो जाता है। दैट इज व्हाई आई फॉलो दिस लेंथी प्रोसेस, जस्ट टू मेक योरसेल्फ अवेयर ऑफ द होल नेविगेशन प्रोसेस। ठीक है, गो टू द सेटअप मेनू, गो टू द बिल्ड मेनू, एक्सपैंड द क्रिएट मेनू, expand the workflows and approval. There is a direct link for workflow, just click on this. So why we go in this way? Because I wanted you to learn the navigations. ठीक है, तो हम हर उस पॉसिबिलिटी के लिए तैयार हो रहे हैं दोस्तों जो कल चल के हमको इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए। सो एक हमने कल क्रिएट किया हुआ, नाउ यू सी द नेम ऑफ दैट रूल यहाँ पे आ चुका है। यस्टरडे दिस टेबल वाज ब्लैंक,
and we created a new rule. Now we can see, yeah, yesterday we have created this. तो ये है वो जो हमने last कल बनाया था. This was on the which object? Lead object. Whether this rule is active? Yes, this rule is active. Now I ask you one question over here. I created one workflow on the lead object. I created one workflow on the lead object. How many more I could create on the same object? Yes, come on. How many more I could create on the same? On one object, how many workflows you could create? Come on, come on, come on, come on, come on. How many workflows that you can create on a single object? This is my question. Exactly, Sandesh. 500 workflows rule that you could create. Now, second question. How many activated workflows could be there on a single object? You can create yeah, Sandesh, once again, Prajwal is also same, right, for this. 50 rules, 50 activated rules. Like, great guys, great going. Thank you so much. चलो, तो नया rule बनाते हैं. Let's create this workflow, new rule. ठीक है, on which object? चलो वापस चलते हैं. Position object पे है, वैसे तो फिर भी एक बार देख लेते हैं. Configure the workflow on which object? Position object. So let me select from this list. Let me select the position. Okay, click the next button. Give the name. You could follow any naming convention for this. What I'm creating a new position assignment notification rule. So whenever somebody is going to read this, तो उसको समझ में आएगा कि यार देखिए नया पोजीशन रिकॉर्ड जब भी क्रिएट हो के असाइन हो, किसको असाइन होता है, वी नो दिस. अब इतना डिटेल तो नहीं बता सकते हम ये, बट एटलीस्ट इन द शॉर्ट फॉर्म we could write this कि हाँ जब ये असाइन हुआ है वर्क को, पोजीशन असाइन हुआ है हायरिंग मैनेजर को, so he should get a notification and this is whole the rule. यही है वो rule. ठीक है. Now you could elaborate the same thing on the description. आप चाहो ना तो description पे इसको elaborate कर सकते हो. What is happening? You could elaborate the same thing on the description. यहाँ पर आप चाहो तो अच्छे से elaborate करके लिख सकते हो. ठीक है. Now see what I want. I wanted this to be happen when the record is created only, when a position record is just created, or rather I wanted this to be happen every time whenever a new record is created or it is edited. Okay. Or I wanted this to go with this any criteria to be get checked before firing the rule. See, if I click this created, nothing happens. Probably you have noticed this already. If I click check this created and anytime it is edited to subsequently meet the criteria, nothing happens. Now, as soon as I select this second option created, and every time it is edited, I'm getting one of the warning message, one information, not warning. This I symbol stands for the information. So it's actually giving me one of the information. See, now, जैसे मैं I पे रखता हूँ, यहाँ पे आता भी है कि what kind of icon this is. This is an information. So what is mentioning? See, you cannot add time-dependent workflow actions with this. That means we also have discussed this. Okay, there are two types of actions: immediate, time-dependent. Immediate, time-dependent. Okay. So immediate action could be added everywhere. Aap created and every time it is edited per whole. Moreover, there also. Just a second. 1 second. So you can add immediate action everywhere. Created and every time it is edited. Created and any time it is edited, right? But दूसरा जो है आपका time dependent action could be created on created and anytime it is edited, meeting the subsequent criteria. But if you wanted to have the time dependent action, a time dependent action, बहुत ध्यान से सुनिए, a time dependent action, और लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, या रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है. So a time dependent action cannot be created, या cannot be attempted, cannot be executed on the criteria created and every time it is edited. You cannot add the time dependent. Why? What is the reason for that? I'm going to tell you after this example is over.
Okay, what is the reason why cannot I create a time dependent action for this criteria? That's we are going to learn. And this is the most favorite interview questions whenever they are onto the workflows. So if I repeat this, what is a workflow? If this is the first question, the answer is workflow is a kind of business automation process. And using the workflows, we can certainly automate a few of the business process, like you can send an email, you can update a field of any object, you can assign a task to any of the users, or you could send the outbound messages to the external system. Now, workflow is a combination of events and action. That means if some event occurs, then the action is going to fire. All these actions, what I have just listed out, are dependent on the events. Even there are three different kinds of event once again: created and every time it is edited, and then created and any time it is edited, meeting the subsequent criteria. There are two different kinds of actions also depending upon the nature: immediate, time dependent. Immediate is something which happens immediately as soon as the event occurs. Time dependent is something a periodical alert sort of thing. It's going to be happen periodically, depends on the event occurred. So, but for the time dependent action, we cannot select the criteria number 2, that's created and every time it is edited. If this is your criteria, you cannot enjoy the time dependent action. Why? I'm going to tell you that. Okay, so this is all up to this we have learned so far. इतना हमने पढ़ा है अब तक, ठीक है? आगे बढ़ते हैं. Because here I wanted to have time dependent action clear cut. We want immediate, we even want time dependent actions also. हमें यहाँ पे दोनों चाहिए, इमीडिएट भी चाहिए, साथ ही साथ टाइम डिपेंडेंट एक्शंस भी चाहिए. और इसीलिए मैं सेकंड क्राइटेरिया तो लेके ही नहीं सकता. मेरे पास दो ही ऑप्शंस है, पहला और तीसरा. तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं सबसे पहले ये फैसला करूंगा कि यहाँ मुझे क्या चाहिए, whether I wanted all this to be happen only on insert या फिर insert और update दोनों पे. तो यहाँ मुझे सिर्फ इंसर्शन पे चाहिए. as soon as a new record is being created, एक नया रिकॉर्ड, one new record is being created inside the position object, तभी मैं चाहता हूँ. That means I wanted this whole process to be executed only on created. That is why I'm going with this criteria. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं इस चीज पे. आइए अब यहाँ पे क्राइटेरियाज जो भी है, रूल कंडीशंस जिसको बोलते हैं, और मैंने कल भी ये बात निकाली थी, आज फिर से इस चीज पर आपको मैं रिवाइज करता हूँ. देखिए आगे चल के वंस वी गेट कंप्लीटेड विद द प्रोसेस बिल्डर, सो मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप प्रोसेस बिल्डर और वर्कफ्लोज के डिफरेंसेस निकाल के रख लें. इसमें आपको एक पॉइंट है जो मैं अभी दे रहा हूँ, वो चीज ये है कि वर्कफ्लो में एक एटलीस्ट यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन रूल कंडीशन. कि बिना एक रूल कंडीशन सिलेक्ट किए वी कैन नॉट मेक द वर्कफ्लो टू बी गेट फायर्ड. लेकिन प्रोसेस बिल्डर में ऐसा कुछ नहीं है. प्रोसेस बिल्डर में इवन विदाउट हैविंग एनी क्राइटेरिया यू कुड फायर अ प्रोसेस बिल्डर. तो ये एक डिफरेंस है. तो यहाँ पे कल आपने ये जाना, आज फिर से आपने देखा कि जब भी हम कोई वर्कफ्लो बनाते हैं तो हमें एटलीस्ट एक रूल क्राइटेरिया देना पड़ता है. तो ये क्या देना? सो इफ आई गो टू दिस पोजीशन ऑब्जेक्ट एंड इफ आई ट्राई टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड ओवर हियर, लेट मी वंस अगेन गो टू दिस, और मैं देखता हूँ कि इसके पेज पे क्या क्या है. उन सारी चीजों को ध्यान में रख के, ठीक है, हम यहाँ पे रूल कंडीशन डिसाइड करेंगे. अभी एक्चुअली मैं नहीं करूंगा ये, मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ. आप लोग मुझे बताएं कि हमने क्या रूल कंडीशंस रखनी चाहिए. व्हाट शुड बी केप्ट ओवर हियर. ये आपका दिमाग क्या बोलता है? चलिए वन बाय वन स्टार्ट टेलिंग. Yes, no answers. Nobody is willing to say anything. All audiences. अक्षय का कहना है कि ईमेल शुड बी नॉट नल. बिल्कुल सही है. चलिए अक्षय के अकॉर्डिंगली मैं पहला रूल कंडीशन इंपोज करता हूँ. व्हाट? के पोजीशन ऑब्जेक्ट में जो ईमेल आईडी है, एचआर की ईमेल आईडी नाम है फील्ड का, दैट शुड नॉट इक्वल्स टू नल. ठीक है, ब्लैंक मतलब नल. चलिए अकॉर्डिंग टू अक्षय आई हैव लाइक इंपोज दिस क्राइटेरिया. एनीथिंग मोर? और कुछ हो सकता है क्या यहाँ पे? यस, कम ऑन गाइस, सारी फील्ड्स आपके सामने में है. एवरी फील्ड इज इन फ्रंट ऑफ यू. आई जस्ट वांटेड यू टू इवैल्यूएट.
कि आपके नॉलेज के हिसाब से कौन कौन सी कंडीशंस हमें चेक करनी चाहिए बिफोर एक्चुअली वी फायर द ईमेल. One more thing I have, position status should not be closed. Exactly. ठीक है. Position status should not be closed. The second thing what Akshay is again answering is that के position का जो status है that should not be closed. और ये बिल्कुल सही भी है. देखिए, अगर position status is equals to closed है, position status should not equals to closed. Sorry, because if it is closed, तो आप email क्यों दोगे उसको? भाई that means if the position is closed यानी क्या है कि या तो दो possibility, या तो position ही रद्द कर दी गई है. Now position is being discarded that we don't wanted this position when we are not in a need. A second possibility कि the candidate जितने भी चाहिए थे वो सारे रिक्रूट हो चुके हैं. ठीक है. माइलस्टोन डेट हैज नॉट बीन ओवर, ये तो अभी नहीं मैं इसको इंक्लूड करूंगा. माइलस्टोन डेट को फिलहाल साइड पर रखते हैं. शुड नॉट ऑन बी होल्ड, वो ठीक है. आप ठीक है ये भी बोल सकते हो, चलो कोई पॉसिबिलिटी. अगर आपको ये भी लगता है सही तो आई एम एग्री विथ योर ओपिनियन. आई डोंट हैव दिस. तो माइलस्टोन डेट तो नहीं, माइलस्टोन डेट अभी रहने दो, इसके ऊपर मैं कुछ आगे बताने वाला हूँ अभी आपको. इसको फिलहाल रहने देते हैं. सेकेंड पॉसिबिलिटी, अगर आप कह रहे हैं कि पोजीशन होल्ड पे नहीं होनी चाहिए, तो इवन आई एम एग्री विद दिस ओपिनियन ऑल्सो. अगर पोजीशन होल्ड पर है, ठीक है, तो भी कैंडिडेट रिक्रूट करने की आवश्यकता नहीं है आपको. और कोई पॉसिबिलिटी? एक और चीज, आप रिक्रूट बोल रहे हो तो फिर एक और ले लेते हैं यहाँ पे कि पोजीशन स्टेटस शुड नॉट इक्वल्स टू रिक्रूटेड, ये भी नहीं होना चाहिए. शुड नॉट इक्वल्स टू व्हाट? नॉट इक्वल्स टू रिक्रूटेड, ये भी नहीं होना चाहिए. बिकॉज ये तीनों में से अगर क्लोज्ड है, अगर होल्ड पे है, अगर रिक्रूटेड है, अगर इनमें से कुछ भी है तो कैंडिडेट को आपको उसको ईमेल देने की जरूरत ही नहीं है. सो अपार्ट फ्रॉम द माइलस्टोन डेट आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट. ठीक है. तो ये जो आपने अभी जो एनालिसिस करी और जिन लोगों ने भी आंसर दिया, दैट इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड कि आपको रूल कंडीशंस पे क्या देना चाहिए. ठीक है. एंड आई रियली अप्रिशिएट योर जजमेंट फॉर दिस. ठीक. तो दिस इज ऑल. ये nobody is going to tell this all. ये हम हैं. We are the responsible person to develop this whole logic. और ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे कि आप लोगों को ये लॉजिक आप डेवलप कर रहे हो, धीरे धीरे सही, लेकिन आप डेवलप कर रहे हो कि बेस्ड ऑन दिस पोजीशन का जो फॉर्म है उसको देखने के बाद अगर मैं ईमेल फायर करना चाहता हूँ एक्नॉलेजमेंट के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, तो उसके पहले मुझे कौन कौन सी कंडीशंस चेक करनी चाहिए. तो जैसा आप लोगों ने बताई ये सारी कंडीशंस, आई एम रियली अप्रिशिएट. और मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज से कि धीरे धीरे सही, लेकिन ये लॉजिक आप सभी लोग डेवलप कर रहे हैं. ठीक है. आई रियली अप्रिशिएट दैट. चलो आगे बढ़ते हैं. तो विद ऑल दिस गुड कंडीशंस, ये सारी चेक करने के बाद अगर पोजीशन क्लोज नहीं है, पोजीशन होल्ड पे नहीं है, और पोजीशन का स्टेटस रिक्रूटेड भी नहीं है, साथ ही साथ एचआर की ईमेल आईडी भी ब्लैंक नहीं है, तो वर्कफ्लो फायर करो. ये बहुत अच्छी बात है. इट्स अ वेरी गुड जजमेंट. आइए, तो ये रूल कंडीशन हमारी बनके तैयार हो गई. और फिर अगर ये सवाल कभी भी इंटरव्यू में आया, कैन वी ऐड time dependent and immediate action both? This is the answer. Answer is in front of you. See over here. Yes, certainly we could add this. आप देखिए इस पेज पर आपको दोनों ऐड करने के प्रोविजन है. यू कुड ऐड इमीडिएट, यू कुड ऐड एज वेल एज टाइम डिपेंडेंट एक्शंस आल्सो. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. यस, इन a single workflow we could add both. We could add immediate actions, we could add the time dependence also. ठीक है. चलिए आइए. So let me add first of all the immediate action. पहला तो immediately एक email जाना चाहिए. So in the immediate workflow actions, I'm adding this action. What? Email alert. So let me give this name as to be that immediate, or rather new position creation notification alert, but what? Immediate. ठीक है. Because I wanted this to be happen immediately, and so I'm giving this name, immediate name देता हूँ मैं. Email template, here you need to select. If you want to fire an email, you must have a template, है ना. This one is a prerequisite guys. हमेशा याद रखो कि अगर आप ईमेल फायर कर रहे हो तो यू मस्ट हैव अ टेम्पलेट, यू मस्ट हैव अ टेम्पलेट. और ये जो पेज है ना, इस पेज को याद रखना, ये ईमेल अलर्ट वाला पेज है. ये आप क्या बना रहे हो? ईमेल अलर्ट. इसको याद रखना. इसलिए याद रखना क्योंकि ये प्रोसेस बिल्डर पे, अभी तो ये डायरेक्टली आप मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जाते ही अपने आप आ जाता है. प्रोसेस बिल्डर में दिस इज समथिंग जो हमको अलग से करना पड़ता है. ईमेल अलर्ट.
ठीक है, तो इसको याद रखना। और ये मैं वहां पे फिर आपको फिर से रिवाइज करके दूंगा कि देखिए मैंने एक वक्त था 18 तारीख को मैंने आपसे कहा था कि इसको याद रखना। ठीक है, आइए। सो ईमेल टेम्पलेट जो है हम सिलेक्ट करते हैं, तो हमने ये टेम्पलेट को स्काई लाइन के फोल्डर में रखा हुआ है और इस टेम्पलेट का नाम है पोजीशन क्रिएशन। अब देखो ये मैं टेम्पलेट जो यूज कर रहा हूँ हर बार एक ही यूज करूंगा। यहाँ पे मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत करें इसमें और 5 अलग अलग तरह के 6 अलग अलग तरह के ईमेल टेम्पलेट्स बनाएं, ताकि हर बार कुछ नया जाए, है ना, हर बार कुछ नया जाए। तो थोड़ा सा इस पे आप क्रिएटिविटी बताइए अपनी, थोड़ा समय इन्वेस्ट करिए। और यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा है कि यू नीड टू सिलेक्ट द ईमेल फील्ड। तो पोजीशन ऑब्जेक्ट में जो भी ईमेल फील्ड होगी वो यहाँ डिस्प्ले होती है। तो पोजीशन ऑब्जेक्ट में जो ईमेल फील्ड है उसका नाम है एचआर ईमेल आईडी, इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। आप इसे सिलेक्ट करें और ऐड करें। ठीक है, आई वांटेड टू हैव द 5 ईमेल आईडीज वंस अगेन, सो कैन यू गाइस प्लीज जस्ट पोस्ट इट टू मी थोड़ा सा जल्दी, है ना। तो या अक्षय हैज गिवन, after Akshay I have Sohail, after Sohail somebody else wanted to give, आप में से कोई और देना चाहता है? Only 2% of you has responded. Anyways, up to 5, yeah, Kiran has given, and yeah, that's sufficient. I got it. So Kiran also has given her email ID. Rajwal has given the email ID. Suraj and Yash, both of you has given. I think I could add only one. So I'm adding Yash. Okay, Suraj, whatever. Anyways, so these 5 email IDs, let me just copy this once again. I'm going to paste it out somewhere so that मैं इसको future में भी use कर पाऊँ. ठीक है. Okay. Let me save this. And I added one immediate action. ये मेरा immediate वाला part हो गया. ठीक है. Up to this I have completed 201. Up to this I have completed. Immediate action हो गया. अब हम चलते हैं time dependent actions की तरफ. ठीक है. चलो भाई. देखिए. Time dependent action ऐड करने से पहले आपको टाइम ट्रिगर्स क्रिएट करने पड़ते हैं. नो वर्कफ्लो एक्शन हैव बीन एडेड. और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बिफोर एडिंग अ वर्कफ्लो एक्शन, इसके पहले कि आप यहाँ कोई एक्शन ऐड करें, जैसे आपने यहाँ इमीडिएट में आपने एक एक्शन ऐड किया, कौन सा एक्शन? ईमेल अलर्ट. तो टाइम डिपेंडेंट में इसके पहले कि बिफोर एडिंग एनी वर्कफ्लो एक्शन यू मस्ट हैव एटलीस्ट वन टाइम ट्रिगर टू बी डिफाइंड. एक टाइम ट्रिगर तो भी ऐड करना. तो ये टाइम ट्रिगर्स क्या होते हैं? दीज आर योर टाइम ट्रिगर्स. 10 days बिफोर, 5 days बिफोर, 2 days. टाइम ट्रिगर्स आर बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर्स एंड आफ्टर्स, बिफोर्स एंड आफ्टर्स. तो ये कहलाते हैं टाइम ट्रिगर्स. तो लेट मी क्रिएट, आई हाउ मेनी आई वांटेड 1, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. I wanted to create these 6 time triggers. So let me first of all create the time trigger. पहले मैं time trigger create करता हूँ. 10 days before, 5 days before, 2 days before, 1 day before, 0 days after or before, it's one same thing, 1 day after. And once I have created all these time triggers, when I'm done with all this, I'm going to add the action. That is second part. Let me first of all create the time trigger. Okay. So 10 days before, add a time trigger. How many days? 10 days. What? Before and after? Before. Before what? Before what? Before the position milestone date. तो यहाँ ये जो फील्ड है ना, ये जो पिक लिस्ट है, यहाँ पर केवल आपको पोजीशन ऑब्जेक्ट से, ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर आपको पोजीशन ऑब्जेक्ट से सिर्फ वही फील्ड्स नजर आएंगी जिसका टाइप है डेट, जिसका डेटा टाइप है डेट. डेटा टाइप क्या होता है आप जानते हो. जब भी हम कोई नई फील्ड क्रिएट करते हैं वी नीड टू सिलेक्ट द डेटा टाइप. डेटा टाइप कुड बी डेसिमल, नंबर, रिलेशनशिप, है ना, डेट, टाइम, बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं. 19 डेटा टाइप्स होते हैं ऑल टुगेदर. तो यहाँ आपको सिर्फ वही पोजीशन ऑब्जेक्ट में से वही फील्ड्स नजर आएंगी जिसका डेटा टाइप है डेट, रूल ट्रिगर डेट. ये रूल ट्रिगर बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है. उसके बाद में पोजीशन ऑब्जेक्ट से क्रिएटेड डेट, पोजीशन ऑब्जेक्ट से लास्ट मॉडिफाइड डेट, पोजीशन ऑब्जेक्ट में से माइलस्टोन डेट और ओपन डेट. ये ओपन डेट, माइलस्टोन डेट ये हमने क्रिएट किया है. और जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें 2 चीजें अपने आप क्रिएट होती है, क्रिएटेड एंड लास्ट मॉडिफाइड बाय. क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय. तो ये डेट फील्ड्स है ना. तो यहाँ आपको वही फील्ड्स नजर आती है जिसका डेटा टाइप होता है डेट.
याद रखें इस चीज को। और याद क्या रखना, ये तो साफ दिख ही रहा है यहाँ पे। अगर नहीं भी याद रखा तो क्या फर्क पड़ता है, as soon as you click over here, तो यहाँ आप देख सकते हो कि सारी चीजों के आगे में डेट लिखा हुआ है। ठीक है, चलो भाई। सो आई वांटेड दिस ट्रिगर टू बी गेट अप्लाइड ऑन द माइलस्टोन डेट। मेरा सारा लॉजिक माइलस्टोन डेट पे निर्भर करता है, इसलिए मैंने माइलस्टोन डेट सिलेक्ट किया। सो 10 days बिफोर माइलस्टोन डेट, सेव इट। तो यहाँ पे क्या बनाया आपने, आपने एक टाइम ट्रिगर बना लिया है। दिस इज योर वन टाइम ट्रिगर। एक्शन बाद में ऐड करेंगे, एक और टाइम ट्रिगर बनाते हैं। हाउ मेनी डेज, नो 5 days व्हाट बिफोर व्हाट, माइलस्टोन, सेव इट। ठीक है, 5 के बाद में आई थिंक इट्स 2 2 1 एंड 0। ओके, वन मोर टाइम ट्रिगर आई हैव क्रिएटेड। दो मैंने बना लिया, तीसरा बनाने जा रहा हूँ। इट्स लाइक 2 days व्हाट बिफोर क्या, माइलस्टोन डेट, सेव इट। So 10 5 2 and then 1 day before, so it's like 1 day before। हाँ, डेज के अलावा आवर्स होते हैं, डेज के अलावा मंथ नहीं होता, इट्स लाइक आवर्स। ठीक है, 1 day बिफोर व्हाट, माइलस्टोन डेट। ठीक है, 1 day बिफोर। व्हाट इज नाउ लेफ्ट, 10 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 1 day क्या है, बिफोर है ना, 1 day बिफोर, yes exactly। Now 0 days, okay, so let me add one more time trigger। It's 0 days, you keep it after or before, it's not going to bother, it's one and same thing। 0 days before or after, it's same, like it's, we are talking on the date of milestone date। So it's like 0, and then the final is 1 day after the milestone date has been crossed। So it's like 1 day after what, milestone date। So let me now save this। तो अभी मैंने क्या क्रिएट किया ना, what I have created over here is the time triggers। So these all are that called as time triggers। आप icon भी देख लो यहाँ पे, a similar kind of icon। These all are called as time triggers। 10 days before, 5 days before। I am yet to add this action, but yeah, हमने at least time triggers तो create कर ली। अब हम चलते हैं गवर्नर लिमिट, जो हमने आपको पढ़ाई थी यहाँ पे, जो हमने लिखी है। How many time triggers I could create? I could create in a workflow, I could maximum create 10 time triggers, not more than that। Okay, 6 we have created. That means we additionally have a scope of like to create 4 more time triggers. Maximum you could create 10 time triggers. Maximum you could create 10 time triggers. In our example, what we have done, like we have created 6 time triggers. I have a scope to create 4 more time triggers। Okay, चलो, अब inside the time trigger now you need to add the action। time trigger के अंदर action add करने पड़ते हैं। तो what I wanted to happen in the 10 days before, मैं क्या चाहता हूँ, email भेजना चाहता हूँ। 5 days before email भेजना चाहता हूँ। 2 days before email। 1 day and after 1 day it's like field update। ठीक है, so email alert है everywhere, everywhere it's like email alert। So let's start with this 10 days before। What you want, I wanted to send an email। So within this list, select this email, give the name like 10 days before, position, milestone, date। I wanted to fire one email। Select the email template। Here I wanted you to create अलग-अलग email templates। मैं आपसे expect करता हूँ। So I'm selecting the same because I have only one with me, but you guys can create multiple fields। So select the emails over here, and the guys, those who have given me the email ID, तो ये हैं वो 5 लोग जिनको ये ईमेल पीरियोडिकली आने वाले हैं। along with me, you guys are going to get this। save it। ठीक है, तो ये I have added one action in this time trigger 10 days before। this is one time trigger। in this time trigger I have added one action। how more action I could add? now let's once again go to the governor limit। अब ये कैलकुलेशन आपको एकदम क्लियर होगा कि you could first of all you could create maximum 10 time triggers। now within one time trigger you could maximum add 40 actions। 40 immediate, 40 time dependent, but 40 time dependent inside one trigger। तो मैं ऐसे कितने बना सकता हूँ, 10। तो अगर आपसे अब मैं फाइनल कैपेसिटी पूछूं कि मुझे बताइए आप सभी लोग कि हाउ मेनी इमीडिएट एक्शंस एंड टाइम डिपेंडेंट एक्शंस आप वर्कफ्लोस पे, एक वर्कफ्लो पे प्लान आउट कर सकते हो। तो एक वर्कफ्लो इन सिंगल वर्कफ्लो कुड फायर 40 इमीडिएट, 400 टाइम डिपेंडेंट एक्शंस। काफी बड़ी कैपेसिटी है। ठीक है, चलो
I hope this calculation is absolutely clear to everyone. It's a small mathematics, nothing else. इसके लिए हमें कोई rocket science थोड़ी ना पढ़ना है. What we want 5 days before, again we wanted to send an email, right? Yeah, I'm giving this name as to be a unique name है, you should be try with every time you should give a unique name for this. अगर आप एक ही नाम try करोगे, it's going to give you the error. Okay, let me select the Skyline folder. I'm selecting the same from this list, like email. I'm copying this, and if I have not pasted, yeah. So these all guys are going to get the repeated emails. What we want 2 days before, let's add the action. Again, I wanted to send the email. So it's like 2 days before. Let me select the email template for this, which is inside the Skyline folder. So I'm selecting this email template. I'm selecting the email field, and this field I am adding those email IDs. Let me save it. And this was 2 days before. Now 1 day before also I wanted to fire the email. So let me select the email template once again. So it's one day before, and select the template for this. Template is position creation notification. From this you need to select the email को select करो, add करो all those email IDs जिसको आप CC में रखना चाहते हो, and save it. Okay, and 2 days हो गया, 1 day भी हो गया. On the day of this milestone date, we also wanted to fire email. So it's like 0 day before or after, it's one and same thing. Now the same email template once again. Skyline, position, creation, and email field. Select this field, add it, add the email ID, save it. Okay, so up to this, it was a repeated process, and probably everyone have seen this and understood also. Like, तो ये हो गया हमारा 10 days before email alert, 5 days before email alert, and then 2 days before email alert, and then 1 day before email alert, even on the day of milestone email alert. But what we wanted 1 day after 1 day, we wanted a specialized operation. I wanted to change the status of the field, right? So 1 day after, first of all, I wanted a field update action. Okay, not email alert. I wanted to have a field update action. What we want? I wanted to change the status positions key status field to this value close, right? So let's plan out for this. So 1 day after the position milestone date, let's go to the action. Here I wanted to go with the third action. That's field update. New field update. Select this and see the interface. How does it look like? So it's let me give any name for this. Update position status value. I'm selecting this. Description you wanted, you can give. Otherwise, you could skip this process also. So which fields to be updated? See the interface. How does it looks like? और अभी कहीं ना कहीं Salesforce पढ़ते 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 admin की तरफ पढ़ते पढ़ते you probably have even realized this कि admin is completely non-coding जैसा मैं कहता था, and every interface is a similar kind of interfaces are there. So everything is very visible. Salesforce is a little bit, no, not little bit. Salesforce is exactly a visible thing, and that is why it's very easy for everyone to learn this. ठीक है, कौन सी field update करनी, कौन सी object की, why it's giving me the name of hiring manager. We are going to discuss this topic also. Just after this, I have something for you. That's probably tomorrow. Today we are going to end up on this. Yeah, probably tomorrow I'm going to start with a new topic called as cross object field update action. Okay, so why I'm seeing the name of hiring manager, that we are going to discuss it by tomorrow. But today we will stuck with the position. हमें position की ही एक field है. कौन सी field है भाई साहब? Status, position status, इसको change करना है. तो position में object में एक field है. क्या नाम है उस field का? Position status. अभी देखो अब how does this interface looks like? अब ये कैसा दिख रहा है ना? And as soon as you select this, see what happens. Observation, position status, and see something happen. The page is automatically refreshed, and उसके नीचे का कुछ यहाँ पर आ गया, कुछ अपने आप आ गया. Re-evaluate the workflow rules. No, I don't want to go with this. If you wanted to have more information, just put your cursor over here. If this field update changes the field value of all workflows associated with blah blah blah. Anyways, I don't want to do this. So because see, position status is a pick list. Position status is a pick list. What you want?
It's giving me 3 different option. KBC खेल रहा है मेरे साथ. वहाँ 4 ऑप्शन होते हैं, यहाँ 3 ऑप्शन है. You want me to assign a value above the current one? For example, if your selection is in progress, this is what the previous value of this. For example, if this is the value for this position, this is the value. Let me make this absolutely clear to everyone. For this senior admin, what is the status? Let me change the status to be in progress. Save it. So if I ask you, what is the status of this position right now, you could see that the name is in progress. What do you want me to do? Workflow is asking you, workflow is asking you, what you wanted me to do. If I select this option, the value above the current one, I mean, what you have selected was in progress. Do you want me to select a value above to this? What you have selected was in progress. You wanted it, you wanted me to make it like one position above open approved. Yeah, this is what you want. This is what you want. Or you wanted the value below the current one. Oh, okay, your value was initially like in progress. You wanted me to select one value a lower, let's say on hold. Do you wanted me to do this, or rather a specific value? Yes. Now I ask you this, out of these 3 options, what we would like to go for? हमें क्या चाहिए? एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली, और to a specific value? Specific, sir. Specific value है ना, absolutely clear. उसमें कोई बड़ी बात नहीं. We wanted a specific value. What value? Closed. We wanted after 1 day of milestone, we wanted this position status value की value जो है क्या बनना चाहिए. He wanted this to be closed. I'm selecting this and saving it. That's it. हो गया, बन गया. That's it. हो गया, बन गया. ठीक है. Everything has been done except one thing. Make it done और एक्टिवेट करो. तो कल भी मैंने आपको ये चीज बताया था कि वर्कफ्लोज एंड प्रोसेस बिल्डर कभी भी अपने आप एक्टिवेट नहीं होता है. यू क्रिएट द रूल, दैट डजंट मीन्स इट इज एक्टिवेटेड. वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन. इफ आई क्रिएटेड, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आई एम योर इंटरव्यूअर, आई एम आस्किंग, इफ आई क्रिएटेड अ वर्कफ्लो रूल, it is going to be activated by default, or something I need to do. I mean, rather I activated it manually, or it's going to be get activated automatically. Answer: it is not going to be activated automatically. Whenever we create a workflow, by default the active status is disabled. The checkbox is not checked, it is unchecked. So you need to activate this. You manually need to activate this. How? Just click this button, activate. Always remember this. Always remember this. Okay, so because we are firing one of the email, it's asking me for some more thing, that he just wanted me to select the user. That's it, nothing else. Nothing else. Don't worry about this. Don't at all think more. Just select the user. That's it. This is, and save it. हो गया, बाकी कुछ भी नहीं करना. Because we are asking periodical emails हमने मांगे हैं. That is why उसने user के बारे में पूछा कि कौन से यूजर की ईमेल आईडी से ईमेल भेजूं मैं, periodical. That is why it has routed towards that. Now it is activated. Don't worry. Okay, activate हो चुका है. चलो अब इसको टेस्ट करते हैं. How we are going to test? क्या मैं इसको मैनुअली टेस्ट करूं? नहीं. I just require to create a new position record. That's it. और मैं जैसे एक नया पोजीशन रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा, I'll create a new position record. I'm going to get one email immediately. एक ईमेल तो मेरे को इमीडिएट आएगा, उसके बाद periodicals आना शुरू होंगे. So let's create a new test. Time dependent action. Okay. HR email ID here. I'm going to give my email ID Sfdc Kasim. उसके अलावा जो 5 लोगों ने दिया है उनको भी ये emails आने वाले हैं. And hiring manager, I could select any name over here. Let me select with the Abhinav Sharma for the Chennai location. Today is the open date, or milestone date I'm selecting is as to be the 30th of December. Minimum budget is this, maximum budget is this. Any more information you would like to give this to? I will check it and let me save this. Okay. So with these all basic details, and the status of this is new position, I'm saving this record position. What? It's kindly select another hiring manager, one-to-one relationship, one-to-one. So this hiring manager is busy, so I require to check this ki bhai sab khali kaun sa hai. Okay, I have Ram Kumar is actually empty. Ram Kumar is presently is not handling any position. So let me assign this to Mr. Ram Kumar.
इसके बाद में फिर मैं वो रिलेशनशिप 1-to-1 हटा दूंगा राम कुमार. Let me now save this. Okay, so one position is created, and as soon as this position is created, we are expecting one email to be get delivered over here. Let me try to refresh this window. ओके, सो मेरे अलावा आप 5 लोग जिन्होंने मुझे ये ईमेल भेजा था, आईडी दिया था, आप सभी को ये ईमेल आ चुका है. ठीक है, एवरी वन ऑफ यू हैज गेट दिस ईमेल. व्हाट इज द कंटेंट? डियर राम कुमार, फर्स्ट ऑफ ऑल अलर्ट अ न्यू पोजीशन. कौन सी पोजीशन? टेस्ट टाइम डिपेंडेंट एक्शन. दिस इज द नेम व्हाट आई हैव गिवन. But this reference ID has been assigned to you with all these details. Everything has been written. And the position milestone date here, the new thing what I have. So you need to close this position on 30th of December, before, on and before, right? तो ये है हमारा time dependent action. This is our time dependent action. Fine. चलो अब एक छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन ज्यादा है. In the next lecture, please, I'm asking every one of you, मुझे याद दिलाइएगा एक चीज के बारे में. या सो मुझे याद दिलाइए एक चीज के बारे में कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि द टाइम डिपेंडेंट एक्शंस कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन सेकंड क्राइटेरिया क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट इज अपडेटेड. ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऑन दिस क्राइटेरिया वी कैन नॉट गो फॉर टाइम डिपेंडेंट एक्शन. ठीक है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ. तो द आंसर ऑफ व्हाई वी कैन नॉट अप्लाई टाइम डिपेंडेंट, तो इसका मैं वी नीड टू हैव अ डिटेल डिस्कशन, बिकॉज अभी एक टाइम डिपेंडेंट एक्शन मैंने क्रिएट किया है तो इसे कंटिन्यूटी में ही मुझे बताना है, बट प्रोबेबली अभी नहीं हो पाएगा बिकॉज इट रिक्वायर्स अ डिटेल डिस्कशन. ओके, सो अभी तो मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ, बट एक सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कल जब मैं स्टार्ट करूँ तो प्लीज रिमेंबर मी, अगर मैं भूल जाता हूँ तो सबसे पहली चीज मैं कल यही बताना चाहता हूँ. तो एनी वन ऑफ यू प्लीज टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मुझे याद दिलाएंगे कि सर हमें इस पॉइंट पर डिस्कशन करना है कि व्हाई द टाइम डिपेंडेंट एक्शन कुडंट बी अप्लाइड ऑन दिस क्राइटेरिया. ओके, सो प्लीज कल थोड़ा सा याद दिलाइएगा. एंड मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ. Yeah, so any questions guys, any questions? Let me first of all stop the recording.